Exercise number 3.3 and the question number 13. Question number 13 is this. Question number 13, exercise number 3.3. Integral of ax divided by square root of a square minus x raised to the power 4. Solution. अगर मैं इस इंटीग्रल को, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. सो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लेट कर लेंगे. लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए sin of theta, and this is the equation number 2. Taking differential on both sides of 2. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन f of x बराबर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई dx. सर dx आ जाएगा. अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ए एज इट इज साथ आ जाएगा, साथ डी थीटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हुजूर वाला यहाँ हमारे पास ये जो 2x है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास x dx है. हम लोग 2 को वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x dx जो है it will be equal to a cos of theta divided by 2 d theta. This is the equation number 3. Using equation number 1, 2 and 3, we have integral of ax divided by square root of a square minus x square whole square dx will be equal to a को हम बाहर निकाल देंगे. x dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी a cos theta d theta divided by 2, a cos theta साथ d theta, और 2 को मैं डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ. फिर अंदर आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हम बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल ऑफ cos of theta divided by taking a square common, we will have here 1 minus sine a square theta, here d theta. Now because we know that 1 minus sine square theta is equal to cos square theta, so we will have here a square divided by 2 integral of cos of theta divided by square root of a square cos square theta d theta, a square divided by 2 cos of theta divided by applying the square root we will have here a cos of theta d theta. Cos theta is cancelled with this cos theta. We will have here a square divided by 2, ये भी बाहर आ जाएगा,
तो 1 divided by a, यहाँ पे d theta, so a is cancelled with this a divided by 2 theta plus some constant of integration. Because from equation number 2 we know that x square was equal to a sine of theta. This was the equation number 2. Now this implies that we will have x square divided by a is equal to sine of theta. Now taking sine inverse on both sides, we will have here sine inverse of x square divided by a is equal to theta. So in place of theta we will substitute this value. So a divided by 2, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए plus some constant of integration. So here we will have a divided by 2 sine inverse of x square divided by a plus some constant of integration. This is the final form, our final result. Question number 14 and exercise number 3.3. Integral of 1 divided by square root of sine minus 6x minus x square, 1 divided by square root of 7 minus 6x minus x square dx. सॉल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस इंटीग्रल को. 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 को एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस एक्स स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर भी कह सकता हूँ. दिस इज ए स्क्वायर. द फर्स्ट टर्म ऑफ फार्मूला, दिस इज एक्स स्क्वायर, because we have to apply the formula a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square. So here at the place of a square we will have x square, and in the place of 2ab we have plus 6x. So by using the formula plus 2, a is x. No, we have to find out the value of b. So to make this term 6x, we will have to place here 3, or 2ab is equal to 6x. And because we know here a is equal to x, so 2 times x multiplied with b is equal to 6x. This 2x will divide 6x, so b is equal to 6x divided by 2x, and the value of b is, x is cancelled with this x, 2 1 the 2, 2 3 the 6, so b is 3. So place here 3. Now we will add the square of 3 and we will subtract the square of 3. मतलब b का स्क्वायर जो है उसको हमने ऐड भी किया और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. अब ये चीज़ जो है ये पूरा फार्मूला बन गया. सो वी विल हैव हियर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड माइनस 9 dx. ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से b ढूंढना है. जब हमें b मिल जाए
तो फिर हमने b के स्क्वायर को ही ऐड करना और उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो जो एडिशनल टर्म होगी उससे मिलकर ये पूरा फार्मूला बन जाएगा, पीछे सब्ट्रैक्शन वाली टर्म रह जाएगी। तो आप सिंप्लीफाई करें इसे और आप ब्रैकेट खोल दें। तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 dx 1 divided by square root of 7 plus 9 minus x plus 3 whole square dx 1 divided by square root of 16 minus x plus 3 whole square dx। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ये स्क्वायर की फॉर्म में है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर dx। ये करना यहाँ तक आपने। अब इसको हम इक्वेशन एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और लेट कर लेते हैं जी हमारे पास ये जो x प्लस 3 है ये 4 टाइम्स साइन ऑफ थीटा के बराबर है। सो लेट x प्लस 3 is equal to 4 sin of theta. This is the equation number 2, taking differential on both sides of 2 we will have here. The derivative of this expression is 1, so we will have here dx, and the derivative of this term is 4 times cos of theta d theta. So because we know that the differential of a function f of x is equal to the first derivative of the function multiplied dx. So this is the equation number 3. Now using 1, 2 and 3, जो 1 थी हमारे पास पीछे इक्वलिटी का साइन था इसलिए मैं इक्वलिटी का साइन यूज कर रहा हूँ। दैट वाज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर dx. Now by substituting the values we will have the final form, that is dx is equal to, from equation number 3, dx is equal to 4 cos of theta d theta. So here we will have 4 cos of theta, here we will write d theta divided by square root of 4 square minus 4 sin of theta whole square. Now applying the squares we will have here 4 cos of theta divided by square root of 16 minus 16 sin of या sin square theta d theta। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 16 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ 4 cos of theta divided by 16 1 minus sin square theta d theta. Now because we know that 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, so integral of 4 cos of theta d theta divided by 16 multiplied with cos square theta square root. Now taking the square root we will have here 4 times cos of theta divided by 4 times cos of theta d theta. This 4 is cancelled with this 4. Cos of theta is cancelled with this cos of theta, and we have here integral of d theta, theta plus some constant integration. Now from equation number 2, we have x plus 3 is equal to 4 sin of theta. This is the equation number 2.
So sine of theta will be equal to x plus 3 divided by 4, taking sine inverse on both sides. Theta is equal to sine inverse of x plus 3 divided by 4. So we will have to substitute this value, or we will substitute this value in place of theta. So the final form is sine inverse of x plus 3 divided by 4 plus some constant of integration. This is the answer. Exercise number 3.3, question number 15. Integral of cos x divided by sin x times ln of sin x dx. This is one solution. Let ln of sin x is equal to u. Taking differential on both sides, we will have the derivative of this function, because differential of a function f of x is equal to the first derivative of the function times the differential of the independent variable. So ln of sin x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा d by dx of ln of sin of x, ये बराबर होगा जी 1 divided by sin of x d by dx of sin x. So it will be equal to 1 divided by sin of x cos of x. So हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, cos of x divided by sin of x. This is the derivative of this function. साथ हम इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे. This is equal to du. This is the equation number 3. Using 1, 2 and 3. From 1, integral of cos x divided by sin x ln of sin x dx will be, we will write this integral as 1 divided by ln of sin x multiplied with cos x divided by sin x dx. Now substituting the values from equation number 2, ln of sin x is equal to u. So integral of 1 divided by u, and this term from equation number 3 is equal to du. So this is equal to ln of u plus some constant of integration, because 1 divided by x का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है ln of x plus some constant of integration के बराबर होता है. Now because u is equal to ln of sin x, so the result is ln of, ये वाला ln अंदर u की जगह पे भी क्या जाएगा ln of sin x plus some constant of integration. This is the answer. और इसका एक दूसरा मेथड भी है जी, that is second method. वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos x divided by sin x ln of sin x dx को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 divided by ln of sin x multiplied with cos x divided by sin x dx. मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करूँगा.
जब ये ln ऑफ साइन एक्स ऊपर जाएगा तो होल की पावर हमारे पास आ जाएगी -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x dx। हमारे पास एक रूल है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ f of x raised to the power -1 multiplied with the first derivative of the function, ये बराबर होता है ln ऑफ f of x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा फंक्शन जो है अब ln ऑफ साइन x है, दिस इज f of x, और ये जो चीज़ है ये इस फंक्शन ln ऑफ साइन x का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये रूल लगेगा और हमारा रिजल्ट आएगा ln ऑफ f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा ln ऑफ साइन x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज नंबर 3.3, इंटीग्रल ऑफ cos x ln of sin x divided by sin x dx। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए काम का आगाज करते हैं। सॉल्यूशन, एक तो है बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको सॉल्व करें तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा कि ln ऑफ साइन x जो है ये u के बराबर है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, एंड नाउ टेकिंग differential on both sides of 2 we have, जो इसका डेरिवेटिव है हमारे पास। क्यों डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिफरेंशियल है किसी भी फंक्शन का वो बराबर होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का मल्टीप्लाई उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल के। सो ln ऑफ साइन x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ln ऑफ साइन x, ये बराबर होगा जी 1 डिवाइडेड बाय साइन x डी बाय चेन रूल लगा रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, ये बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन x मल्टीप्लाई कॉस x। साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके डेरिवेटिव की, दैट विल बी कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x, साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 1, 2 एंड 3। जो 1 है हमारे पास वो क्या है जी, इंटीग्रल ऑफ cos x मल्टीप्लाइड विथ ln ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x dx। इसको थोड़ा सा ज़रा अरेंज करके लिखूंगा, ln ऑफ साइन x मल्टीप्लाई cos x डिवाइडेड बाय साइन x dx। ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये चीज़ जो हमारे पास है ln ऑफ साइन x ये u के बराबर आ गया, और ये पूरी की पूरी जो हमारे पास टर्म है दिस इज इक्वल टू डी यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पे डी यू आ गया। अब इस पे लगेगा पावर रूल के, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर जो n होता है dx, ये बराबर होता है जी x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आ जाएगा u की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So we can write it like this, 1 divided by 2 u square plus constant of integration. Now because we know that from equation number 2 u is equal to ln of sin x, so therefore 1 divided by 2 ln of sin x whole square plus some constant of integration, ये हमारा रिजल्ट है। इसका एक दूसरा मेथड भी है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो उसे भी देख लेते हैं।
सेकंड मेथड, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. इंटीग्रल ऑफ cos x ln ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x dx. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ln ऑफ sin x मल्टीप्लाइड विथ cos x डिवाइडेड बाय sin x dx. अब ज़रा गौर फरमाएं, बिकॉज हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x की nth पावर जो है उसके साथ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बराबर आता है f ऑफ x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. सो अब हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x दैट इज ln ऑफ sin x, और मैंने अभी पीछे इसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करके दिया कि ln ऑफ sin x का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो cos x डिवाइडेड बाय sin x है. सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ये जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो इस पर फॉर्मूला लग जाएगा. वी विल हैव ln of sin x raised to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus some constant of integration, and the result is ln of sin x raised to the power 2 divided by 2 plus some constant of integration. This is the answer. Now, question number 17. Exercise number 3.3. Integral of x divided by 4 plus 2x plus x square. dx. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को. कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx. क्योंकि मुझे कंप्यूटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाना है यहाँ पे. दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इज x. सो b हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें 2x ही प्रोड्यूस करना है तो दैट विल बी 1. अब इस 1 का स्क्वायर ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और उसी को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा ताकि फार्मूला कंप्लीट हो. ये हमने देखना कि b क्या है, सिर्फ b ढूंढना है, उसके स्क्वायर को ऐड करना, उसके स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, लास्ट पे हम प्लस 4 डाल देंगे. दोबारा देख लें, ये हमें a स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 2ab इज 2x एंड बिकॉज जो हमारे पास a होता है फार्मूले में दैट इज इक्वल टू x, दिस इज a स्क्वायर, तो यहाँ से a जो है वो x आएगा. सो 2xb, दिस इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2x. अब 2x जाके जब दूसरी साइड पर डिवाइड करेगा तो 2x डिवाइडेड बाई 2x इज 1. सो द वैल्यू ऑफ b इज 1. तो मैंने b का स्क्वायर ऐड किया और b का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैंने तो असल में डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया. आई हैव एडेड 0. सो यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है. सो बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज, अगर हमारे पास a स्क्वायर हो प्लस b स्क्वायर हो प्लस 2ab हो तो रिजल्ट होता है प्लस b होल स्क्वायर. सो वी विल हैव हियर x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें ये a है ये b है, साथ फार्मूले में प्लस आ रहा है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब ये चीज़ तो सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक तो कवर होगी फार्मूले में. अब आगे का बचा -1 स्क्वायर, तो -1 आ जाएगा प्लस 4. सो -1 प्लस 4 dx. नाउ इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 dx.
अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, जैसे जैसे इस पहले के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो हमने इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो हमेशा याद रखें अगर 3 यहाँ पे है तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर dx। अब इससे आगे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे जी, लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो x प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स टेंजेंट थीटा के। दिस इज द equation number star and this is the equation number 1, taking differential on both sides। अब इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास दैट विल बी 1, सो यहाँ पर dx आ जाएगा, और जो टेंजेंट थीटा का हमारे पास डेरिवेटिव होता है स्क्वायर रूट 3 तो एज इट इज आएगा, दैट इज सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशियल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 using star 1 and 2 we will have, because star जो हमारे पास है वही है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 whole square dx, star equation. Now using these 3 equations we will have here so from here we will substitute the value of x as square root of 3 tangent theta minus 1 divided by, from equation number 1 x plus 1 is equal to square root of tangent theta, so we will substitute here square root 3 tangent theta whole square plus square root of 3 whole square. Now the value of dx is equal to square root of 3 secant square theta d theta. Now we will have here multiplying this factor with each term inside the bracket, we will have here in the numerator square root of 3 tangent theta multiplied with square root of 3 secant square theta minus square root of 3 secant square theta divided by 3 tangent square theta plus 3, and here we have d theta. Square root 3 multiply square root 3 is square root 3 square, and this is 3, so we will have here 3 tangent theta secant square theta minus square root of 3 secant square theta divided by 3 हमने कॉमन ले लिया इनसे, tangent square theta plus 1 d theta. Now because we know that tangent square theta plus 1 is secant square theta, so we will have here integral of 3 tangent theta secant square theta minus square root of 3 secant square theta divided by 3 multiplied with secant square theta d theta.
बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ये 3 से कट जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर इस न्यूमरेटर में मौजूद इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करा, ना कि सिर्फ इस पहले वाली टर्म को। सो देयरफॉर ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जो चीज़ इन दोनों टर्म्स में कॉमन होगी, 3 फॉर एग्जाम्पल 3 कॉमन आता है तो फिर 3 कटेगा दोनों से, ना कि एक टर्म से, क्योंकि ये डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, सिर्फ एक टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा। सो वी विल हैव हियर इंटीग्रल ऑफ 3 टेंजेंट ऑफ थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी जी, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट थीटा माइनस square root of 3 divided by 3 d theta, because we know that 3 is equal to square root of 3 square. So integral of tangent theta minus square root of 3 divided by square root of 3 whole square d theta. Now we will have here tangent theta minus 1 divided by square root of 3 d theta. Now we will apply this integral on each term inside the bracket. Integral of tangent theta d theta minus 1 divided by square root of 3 d theta. इंटीग्रल पहले इस टर्म पे अप्लाई होगा, फिर इस पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है मैंने इसको आउटसाइड लिख दिया और यहाँ पे आप बेशक वहाँ लिख दें। सो जो हमारे पास इंटीग्रल होता है टेंजेंट थीटा का, integral of tangent theta d theta will be equal to the integral of sin theta divided by cos theta d theta। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, मैं माइनस यहाँ पे भी लगाता हूँ, माइनस बाहर भी लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो रूल है वो अलग जगह के, माइनस ln ऑफ cos ऑफ theta plus some constant of integration is the integral of tangent theta. So we will have a minus ln of cos of theta minus 1 divided by square root of 3 theta plus some constant of integration. So now अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारी तो जो गिवन एक्सप्रेशन थी दैट वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आया वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आया, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्स की फॉर्म में। इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की फॉर्म में या एक्स के ज़रिए से हमने बयान करना है। सो बिकॉज इन द इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा था x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा। स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा वाज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम हियर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, and this implies that taking tangent inverse on both sides theta is equal to tangent inverse of x plus 1 divided by square root of 3. So this is the value of theta. Now हमें cos of theta की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। So एक छोटी सी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और कुछ डिडक्शंस करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो बराबर है
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के, हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो टेंजेंट है वो तो बराबर होता है जनाब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और थीटा 90 के दरम्यान में असल में बेस होती है। सो यहाँ से हम डिड्यूस करते हैं कि परपेंडिकुलर एक्स प्लस वन ले लिया जाए और बेस को स्क्वायर रूट थ्री ले लिया जाए। तो अब हम पहले तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो कॉज होता है वो बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो हमारे पास है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। सो बाय यूजिंग द पिथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो hypotenuse will be equal to, or taking the square root in both sides, perpendicular square plus base square whole square root. Now putting the values, hypotenuse will be equal to square root of what is perpendicular, that is x plus 1 whole square, and what is the base, that is square root of 3 whole square. So the final form of the hypotenuse will be square root of, अब क्योंकि मैंने जो शुरू से काम शुरू किया था हम ज़रा उसे देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन थी 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। हम सिंप्लीफाई किए और करते कराते हमारे पास जो इसकी फाइनल फॉर्म आई थी वो ये आई थी। तो ये जो चीज़ है असल में ये बराबर है हमारे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर के 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सो मैं अगर इस फॉर्मूले को ओपन भी कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर है वो 3 आ जाएगा। सो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 आ गया रिजल्ट में। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये वही चीज़ बन गई है। सो ये हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी हाइपोटेन्यूज की, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सो हमारे पास जो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, नाउ cos of theta is equal to base divided by hypotenuse. So because base was equal to square root of 3 divided by hypotenuse is equal to square root of x square plus 2x plus 4. So now we will substitute this value in place of cos of theta. The final form will be minus ln of cos of theta minus 1 divided by square root of 3 theta plus c. Now putting the values, minus square root of 3 divided by square root of x square plus 2x plus 4 minus 1 divided by square root of 3, and the value of theta is tangent inverse of x plus 1 divided by square root of 3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ना हम ln को अप्लाई करेंगे और जो लॉगरिथम है ये डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, इस माइनस को मैं बाहर ही रहने दूंगा। तो ln ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस ln ऑफ
x square plus 2x plus 4 raised to the power 1 divided by 2 minus 1 divided by square root of 3 tangent inverse of x plus 1 divided by square root of 3 plus some constant of integration. तो ज़रूर वाला माइनस का साइन अप्लाई करें, माइनस ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये जो पावर होती है ना लॉगरिथम की, लॉगरिथम जिस टर्म पे अप्लाई हो रहा होता है उसकी पावर असल में लॉगरिथम के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उजरे वाला ये टर्म भी कांस्टेंट है हमारे पास और ये भी कांस्टेंट है। साथ में यहाँ पे वो रूल भी मेंशन कर दूं कि log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a बराबर होता है n मल्टीप्लाइड विद log ऑफ m टू द बेस a के। तो ये मैंने रूल यहाँ पे यूज़ किया कि जो पावर होती है वो लॉगरिथम के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो नाउ वी विल हैव हियर 1 divided by 2 ln of x square plus 2x plus 4 minus 1 divided by square root of 3 tangent inverse of x plus 1 divided by square root of 3 minus ln of square root of 3 plus constant of integration. So put minus ln of square root of 3 plus constant of integration is equal to c prime. So we will have 1 divided by 2 ln of x square plus 2x plus 4 minus 1 divided by square root of 3 tangent inverse of x plus 1 divided by square root of 3 plus some constant of integration. So this is the final form of your result. So enjoy the result. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول